Hi friends, today I am making chicken sticks because so many friends requested me to post this one. So I am taking this chicken. It is boneless chicken. I will make pieces. ऐसे लॉन्ग लॉन्ग काट लेना चाहिए और मैंने वॉश भी कर लिया है. So here I will wash it again. Add ginger garlic paste. One and half spoon chicken masala. Half spoon black pepper. Red chili sauce. I took red chili sauce less than half spoon. This is a small bowl. And I am zooming it. It is the quantity is looking in huge amount. Green chili sauce, tomato sauce, ketchup, add corn flour. Nearly three spoons. Add red chili, salt, little coriander powder, little turmeric, garam masala. Mix well. Marinate it for 2 hours. I am taking these sticks. ये sticks water में half an hour भिगो देना. I kept this chicken for 2 hours in fridge. I am taking सेमियास. इसको ऐसे क्रश करना अच्छे से. अगर आपके पास वाइट सेमियास है तो those are more better to choose white semias, but I don't have white semias. सेमिया बोथ साइड्स लगा लीजिएगा. लगा दे के यू शुड प्रेस लाइक दिस. थोड़ा ऐसे थोड़ा घट से ये सब प्रेस कीजिए. Yeah, here we go. This. Ooh. Yeah, I'm done with this. ये स्टिक्स थोड़ी बड़ी से है, सो मैं थोड़ा थोड़ा कट कर लूँगी बिकॉज वो मेरे डिश में सेट नहीं होंगे. टेक ए पैन एंड हीट द ऑयल.
फ्लेम मीडियम पे रख लीजिएगा। हाई फ्लेम पे होने से सेमियाँ आपके जल सकते हैं। सो मीडियम फ्लेम, पहले हाई फ्लेम रख के लेटर ऑन मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए। लाइट ब्राउनिश कलर आने पर निकाल दीजिएगा, नहीं तो आपकी सेमियाँ जल जा सकती है। Hope you all will try it. ओके, सेमियाँ बारीक होने से जलना चाहे वो बहुत लोग डर सकते हैं। देखिए सेमियाँ जला नहीं है कहीं भी। ऐसे सो यम्मी, डू ट्राई इट। और ट्राई करने के बाद मेरे को ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड like the videos. Bye.